Welcome to 1 Minute series. This is the question asked in previous year 2022 in NEET. Let me discuss an electromagnetic wave in which there is a magnetic wave and an electric wave. Both are mutually perpendicular to each other. But you should know one thing, that force due to magnetic field is equal to force due to electric field. Force due to electric field is equal to force due to magnetic field. Then what is going to happen? Let us see. Force due to electric field is given by Q into E. Force due to magnetic field is BVQ. Then charge gets cancels here. What is left? E is equal to B into V. But it is a wave having velocity of light, not V. You can consider it as C. E is equal to BC. And he is asking us to find out. What is that he is asking us to find out? He is asking us to find out the ratio of B by E. So B by E is equal to 1 by C. That's it. Your answer is C option. Thank you very much. Welcome to 1 Minute series of electromagnetic waves. This is a question asked in 2022 NEET. Let me discuss what is going to happen here. You all know velocity of light in air is given by C, which is equal to 1 by square root of mu naught epsilon naught, where mu naught is permeability and epsilon naught is permittivity of a free space. Now, velocity of light in a medium is given by 1 by square root of mu epsilon. This is for medium. Now, he is asking us to find out V by seeing the four options. That means C by V is equal to square root of mu. This is C. C is upwards. Mu naught comes to denominator and mu comes to numerator. Mu naught into C epsilon and epsilon naught. Okay. Epsilon and epsilon naught. With this, it is clear that mu by mu naught can be taken as mu r, which is called as relative permeability, and epsilon by epsilon naught is taken as epsilon r. You all know about this, but he's asking us to find out V. So V is equal to C divided by square root of mu r epsilon r. This is going to be our solution. That is C option. Thank you very much. My dear students, this is a problem of electromagnetic waves. Let us take intensity. Intensity of light coming from the sun is nothing but power passing per unit area. Okay, power passing per unit area. And you also know intensity, power is equal to energy by time divided by area. Intensity is equal to energy. Energy is nothing but force into displacement. Area I will write first, time I will write next. And displacement by time you can club it. Then force by area. Displacement by time is taken as velocity, but here it is taken as velocity of light. So you got I is equal to Fc by A. Next, here F is equal to Ia by C. Okay. Now, when the light falls and reflects back, then force is going to become 2Ia by C. Double. Because it falls on a body and reflects back, then you can consider double here. Thank you very much. And the thing is, you have to substitute the values here. Force is equal to 2. Intensity means 25 into 10 power 4.
And what is this else now? Area is given. So area, what is area? Area is into 15. Centimeters means convert into meters. 10 power minus 2 whole square divided by C. Then what is C here? C is nothing but 3 into 10 power 8. Just calculate and get the answer. Find out the correct option and this description. Keep the answer. My dear students, this is a problem of electromagnetic waves. Let us take intensity of light coming from the sun. It is nothing but power passing per unit area. Okay, power passing per unit area. And you also know intensity. Power is equal to energy by time divided by area. Intensity is equal to energy is nothing but force into displacement. Area I will write first, time I will write next, and displacement by time you can club it. Then force by area. Displacement by time is taken as velocity, but here it is taken as velocity of light. So you got I is equal to Fc by A. Next, here F is equal to Ia by C. Okay. Now, when the light falls and reflects back, then force is going to become 2Ia by C, double, because it falls on a body and reflects back. Then you can consider double here. Thank you very much. And the thing is, you have to substitute the values here. Force is equal to 2. Intensity means 25 into 10 power 4. What is this else now? Area is given. So area, what is A? Area is into 15. Centimeters means convert into meters. 10 power minus 2 whole square divided by C. Then what is C here? C is nothing but 3 into 10 power 8. Just calculate and get the answer. Find out the correct option and this description. Keep the answer. My dear students, welcome to 2-minute series of shortcut explanation of a concept here. We shall discuss about electromagnetic waves question asked in 2021. Here, let us discuss that there is a capacitor and these two plates of the capacitor are connected to the battery. You all know the current passing through the wire is said to be drift current. It is said to be drift current. And the current flows in the wire. And this is a cyclic process, you know. There is a capacitor having positive charge and negative charge because this is connected to positive and negative. But in between the capacitors there is a gap. In this gap the current passing is said to be displacement current. And this displacement current we have to find out. And this is a concept of a capacitor. You all know in a capacitor charge is equal to capacitance into potential difference, which is connected here. And drift current, if you want to find out, you have to write dq by dt. Differentiate charge with respect to time, because you all know I is equal to q by t. But here you write dq by dt differentiation. And you write id is equal to d by dt of c into v. Capacitance is constant, whereas potential is changing. And it is said in the problem that you have to consider, if you consider the AC current, then what happens? It is represented with V is equal to V naught sine omega t, because it is a sinusoidal wave. Then you write drift current is equal to d by dt of C is constant. Instead of V, you write V naught sine omega t. So C you write like that only. And V naught you write like that only. Sine omega t, if you differentiate, you will get cos omega t.
Okay, and you have to differentiate once again. Omega t also you have to differentiate once again. They will get omega. So sin omega t means cos omega t. Inside omega t is present. If you differentiate omega t once again with respect to time. Okay, so omega into dt by dt is equal to 1. Omega is left. Then finally you will be getting one equation, that is drift current is equal to C omega v naught cos omega t. This is going to be our final answer. That is said to be B option. It is taken as B option. That's it. Thank you very much. प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है जिसके अंदर हम कैपेसिटर ले रहे हैं और कैपेसिटर जो है बैटरी से कनेक्टेड करा हुआ है और इसके अंदर करंट पास हो रहा है। जो बैटरी के अंदर से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा उसको हम बोलेंगे कंडक्शन करंट। ओके, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन करंट। ये कंडक्शन करंट जो है बैटरी के अंदर से निकलकर जो कैपेसिटर की तरफ जाएगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा उसके अंदर। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू ऑपोजिट टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। जब इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट। जब बैटरी चार्ज हो रहा है यानी कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो बाहर का जो कंडक्शन करंट है और अंदर का जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये दोनों सेम रहेगा, क्योंकि जितना करंट बैटरी के अंदर प्रोड्यूस होगा उतना करंट अंदर जाएगा, चार्ज होगा। जब कंप्लीटली अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो फिर इसका अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि वो चार्ज हो गया। मगर चार्ज होते वक्त दोनों करंट सेम होंगे, ये बात ध्यान में रखना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द बी ऑप्शन। थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसके अंदर जो है ना ऊपर जो जा रहा है इलेक्ट्रिक वेव है और जो साइड में जा रहा है वो मैग्नेटिक वेव है। तो ई और बी, अगर ई का डायरेक्शन आई है तो बी का डायरेक्शन क्या होगा, जे होगा, और प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या होगा, के होगा। ये यूनिट वेक्टर्स है आई जे के। तो हमको ई दे दिया और बी पहचानने के लिए बोल रहा, और हम जानते हैं कि ई बाई बी इज इक्वल टू सी। अगर जब b पूछ रहा तो b को ले लेंगे e बाई c। इसका मतलब क्या है, जो भी e का इक्वेशन हम ले रहे हैं उसके नीचे अगर c डाल देंगे तो फिर हमारा b का इक्वेशन आ गया। इसका मतलब इसके नीचे c डालना है, और c का कौन से केसेस है, ये भी है और ये भी है, मगर हमको j लेना है, i लेना नहीं है। तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा और j वाला केस हमारा करेक्ट केस है। तो समझे, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा ना भाई? डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमको पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो यहां पर हमको फॉर्मूला मालूम है, c by v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये तो हमको मालूम है। तो c वैल्यू हमको 3 इंटू 10 पावर 8 ये भी मालूम है। v वैल्यू उन्हें खुद दे दिया 1.5 इंटू 10 पावर 8, ठीक है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। यहां पर दोनों कैंसिल, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर। सो रिलेटिव परमिटिविटी पूछा, परमिटिविटी मतलब म्यू आर। सो म्यू आर इज इक्वल टू 4 बाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4 बाई म्यू आर। म्यू आर वैल्यू हमको दे दिया 2, सो इसलिए ये हो जाएगा 4 बाई 2। देयरफॉर एप्सिलॉन आर इज नथिंग बट 2 होगा आपका आंसर। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हम बेहतरीन अंदाज में समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया है, इलेक्ट्रिक वेव का इक्वेशन दिया। इलेक्ट्रिक वेव का इक्वेशन को हम उसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यहां पर तो ओमेगा के प्लेस में क्या है, यहां पर देख लीजिए, ओमेगा के प्लेस में ये है और के प्लेस में ये है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा के प्लेस में ये है। अगर हमको चाहिए कि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट मालूम करें इन ए मीडियम, तो सबसे पहले क्या है, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ओमेगा इज इक्वल टू के वी। अगर हमको वी होना है तो ओमेगा बाई के डालेंगे। सो वी ओमेगा क्या चीज है, यहां पर देख लो 2 इंटू 10 पावर 10 हो गया। ओमेगा के का वैल्यू कितना दिया, 200, यानी कि 2 इंटू 10 पावर 2 गेट्स कैंसल, ये चले गया तो 10 पावर 8 बचेगा, वेलोसिटी 10 पावर 8 बच गया। और हम ये भी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट c बाई v विच इज म्यू आर एप्सिलॉन आर। ओके, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू 10 पावर 8, और जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दिया, 10 पावर 8 दिया, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर म्यू आर या एप्सिलॉन आर कुछ दिया, म्यू आर दे दिया। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी 1 इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, 10 पावर 8 चले गया, दिस इंप्लाइज दैट यहां पर 3 बच गया विच इज नथिंग बट एप्सिलॉन आर यहां पर हो गया। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, एप्सिलॉन आर वैल्यू इज गोइंग टू बी 9। इस तरह सिंपल वे में इस तरह के प्रॉब्लम करना है। थैंक यू।